Hey everyone, welcome back to my channel. This is Priyasha from XAT, and in this video we're going to talk about the most expected XAT 2025 non-PYQ of DM. Now we all know that the aspirants of XAT especially are aware of the fact that PYQ छोड़कर non-PYQ पर decision making के section में भरोसा कर पाना is really very difficult. And ऐसे situation में अगर कोई ये बात claim कर रहा है that it is one of the most expected non-PYQs, then तब तो मन जरूर करता है जानने का कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है that Priyasha is actually saying that this can be a question in your paper this year or the coming years. So the reason for that is blended in this video somewhere in the middle. तो मैं explain करने के बीच में definitely आपको ये बताऊंगी, so that the ones who are really paying attention and taking notes would be the ones who would not only know the reason behind it being most expected but also understand the type of questions you expect this year and coming year. Okay, so what I'll be doing here is I'll be keeping the screen for 5 seconds on your screen. You can pause it and read it or take a screenshot, and assuming that you have already taken a screenshot of this particular part of the passage, I'm scrolling down so that you completely get the idea and the first question. ओके मैं थोड़ा और स्क्रॉल करूंगी ताकि आप फर्स्ट क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस सभी का स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके उसे पढ़ लो. And once you're done with that, then we will read it together so that हमारे perspectives match करें और हम ये देख पाए कि क्या हो सकता है reason for it to be the most expected one. So stay tuned. But उससे सबसे पहले मैं आपको remind कर दूं that this is a completely free of cost thing which is happening, guys. So make sure you support me more and more by liking this video, and most importantly sharing this with more and more people, because only when more people subscribe the channel grows and that helps me. So make sure you definitely do that. तो चलिए अज्यूम करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, पढ़ लिया होगा पॉज करके वीडियो को. तो अब ध्यान से पढ़ते हैं what is the context here. So the first thing is that during the challenges period of COVID-19, I'm not reading line by line, I'm giving you the context what has happened. तो इस पूरे स्टोरी का जो हीरो है, हीरो जेम्स है. तो सारी क्वेश्चंस आपको जेम के पर्सपेक्टिव से आंसर करने हैं. And it's one of the most important things to know before you start a DM set, because in this DM set आप किसके लिए decision ले रहे हो, that is one of the most important decisions to make. So start with that first. The next thing you would be doing is what is the storyline. So storyline है 2019 के टाइम के पैंडेमिक की, जब विक्रम, who is one of the old college seniors of James, was seeking some financial help from James. And of course, James, keeping in mind a good relationship, obviously did not even bother to ask his spouse or consult his spouse for giving money or not, and he gave him the money because his senior promised him to return that money in 6 months. तो कौन ही नहीं करेगा, है ना. हमारे कोई अगर सीनियर हमें कांटेक्ट करता है जिसके साथ हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है, ओके, सो ऑफ कोर्स वी वुड डेफिनेटली हेल्प देम आउट. But the thing is, the present scenario is that Vikram has not even replied back. Okay, so he has not even replied back, and 6 months have passed. He has not even returned the money and not even thought of communicating with जेम्स एट ऑल. तो ऐसे सिचुएशन में कीपिंग दीज थिंग्स इनटू माइंड, जेम्स ने फिर भी एक मेच्योर डिसीजन लिया कि उसने अभी तक विक्रम को खुद से कांटेक्ट नहीं किया है आस्किंग हिम द मनी बैक, बिकॉज ऑफ कोर्स ही does that because he was a very good emotional support for him in the college days. तो इस चीज की इज्जत रखते हुए he don't want to you know message back Vikram and ask him for the money. बट ये सब कुछ ठीक है. प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है दैट व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट विक्रम इन अ पर्टिकुलर पार्टी और समथिंग, the two new people in the story, Anil and Neha, when they got to know about the situation that James has given some money to Vikram and Vikram has not returned it back, और ऐसा James ने बस casually mention किया था अपनी conversation में, then Anil actually became visibly upset, and then he started talking about the stories, how it is so difficult for Vikram now. He is not only struggling to meet the basic needs but is also entangled in a false legal case. So इससे क्या है, उस पर financial stress भी है और emotional stress भी है. Now putting up all these things in mind, what Vikram's life was being portrayed as
was not very convincing for James to believe, because James को लग रहा था कि Anil might be exaggerating his current scenario just to excuse Vikram's failure to repay the loan. अब ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम तब आई जब जेम्स स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग दैट वाज इट इवन रॉन्ग फॉर हिम टू एक्सपेक्ट अ रीपेमेंट ऑफ हिज लोन. जिस तरह से अनिल ने उसको रिप्लाई किया, he really started feeling guilty about even bringing up the loan. Now this begins the question that due to societal pressure, is he wrong even to ask for repayment of his loan? ऐसे सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए, और उसी पे तीनों क्वेश्चंस बेस्ड हैं. So I believe you have already taken the screenshot of the first question. So now we will see how we can solve the question, but using option elimination. Okay, remember that they are not asking you what you will do in this situation, because most of the students I meet are always telling me that, you know what, Priyasha, I am a very blunt person. I just speak in face to everyone and that's all. मुझे पता है कि मुझे money चाहिए and money is equally important, so I will not fidget with that. But see, this is not how companies work or business work. So when you are answering questions in this set right now, you are supposed to take in mind not just the money matter, but also the existing relationship between Vikram and James. तो ऐसे सिचुएशन में पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को, which is saying that James is not contemplating whether he should ask contemplating whether he should ask Vikram for the loan repayment or let it go. Considering Vikram's potential financial struggles, Vikram has not reached out to James also. So James is now conflicted between both financial obligations and their past relationship. So what should James do regarding the unpaid loan from Vikram? ना ऐसे सिचुएशन में जरूरी है कि हम दोनों चीजों को संभालें, हमारी रिलेशनशिप को भी और पैसे वाले मैटर को भी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट ऑप्शन ए, जेम्स शुड डायरेक्टली आस्क विक्रम फॉर रीपेमेंट. डायरेक्टली आस्किंग कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. अगेन, एज मैंने कहा, बहुत लोग बोलेंगे कि मैं होता तो मैं तो डायरेक्टली पूछ लेता. अब रिलेशनशिप अपनी जगह है, बट सामने वाले को भी समझना चाहिए, राइट? ये हम नहीं कर सकते. प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेटर, और उसको जो चाहिए हमें वो उसे देना है, ना कि हम जो करेंगे हमें वो बताना है. यू गेट माई पॉइंट? एंड दोज हु आर्ग्यू ओवर डीएम क्वेश्चंस आर लिटरली वेस्टिंग देयर टाइम. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, यू एक्चुअली लर्न कि क्या आंसर्स करेक्ट होते हैं. So when we talk about this, we eliminate option A based on the fact कि इस तरह से directly पैसे वापस मांगना is not done. When we come to option B, James should give Vikram more time to repay the loan. यहाँ तक सुनकर अच्छा लगा. अब आगे पढ़ते हैं. Considering his alleged struggles, but communicate that repayment is important when Vikram's situation improves. Now ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि देखो, I understand कि आपको भी अभी पैसे की जरूरत है. So it's okay that you take time, but remember that you have to pay back the money to me. So far if I compare it with option A, उतना भी बुरा नहीं है, but we will still check for better options. तो इसको hold पे रखते हैं. Let's go for option C. James should reach out to Vikram indirectly, showing concern for Vikram's well-being, but subtly reminding him that the loan was that he can give the loan back when appropriate without demanding any immediate payment. अब अगर हम option C को compare करें option B से, so what idea do we get over here? We get an idea दैट देखो, यहाँ पर आप उससे उसका हाल चाल पूछ रहे हो, और उस बहाने ऑफ कोर्स आप उसको याद दिला रहे हो कि ये तो खुद किसी को भी याद आ जाएगा कि हाँ यार, मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, आई विल रिटर्न इट बैक. तो आप इमीडिएट रीपेमेंट भी नहीं मांग रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर शोइंग सम कंसर्न. So what are you doing here? You're technically balancing out both your relationship as well as your financial constraint. That देखो भाई, पैसे तो आपको देने हैं मुझे, बट इस तरह से मुंह खोल के आपको नहीं मांगना है. You get that? So that is where I find option C is better than option B. अब इस पे भी मैं एक point खुद ही डालना चाहती हूँ before you people mention it in the chat, that the ones who overthink, you know, curiosity kills the cat.
Just like that, overthinking can also kill you in the DM section, because if you overthink, then मैं option C के साथ भी बहुत सारी mistakes निकाल सकती हूँ. For example, मैं ये बोल सकती हूँ कि देखो, इसका intention तो यही था कि पैसे उसे वापस चाहिए, but then he is just indirectly showing up that he has concerns for him, which is so bad a thing to do. But remember, it's not how badly you think about someone, it's how badly it is getting portrayed in the society, and the entire corporate world moves in that way. So you have to answer in such a way. So therefore, subtly I'll go with option C, but I'll still eliminate option D by saying that किसी को भी बीच में mediator बनाना is never a solution of these kind of problems जहां आप already एक dilemma में हो between financial constraints and your relationship. So this mediator will definitely make things worse for you. So option D is out. Then I move for option E, where I see that writing off the loan is like आपने financial को side ही रख दिया, which is completely off the game. So that's the wrong answer. So we'll go with C as our right answer, guys. Okay. Now keeping the screen on for question number 2, the options and the question all is together on the screen. I hope you have paused the video and tried it on your own. अब इसके बारे में बात करते हैं, बट थोड़ा सा बता दूं कि ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आया. तो ये कॉन्टेक्स्ट आपके जैट कन्वीनर के पोस्ट से आया है. ओके, so this is a post which has been shared by my very dear and very near sir, okay, जिन्होंने जो जैट के कन्वीनर लास्ट ईयर भी थे, इस ईयर भी हैं, and he himself shared a story about this thing. So when I read through his story, I found out that इसमें तो काफी decision making का मसाला दिख रहा है. So after reading that post about his experiences of how he could not really realize कि मेरी गलती है या मेरी गलती है भी नहीं, I felt that this is a good decision making question. So all the best guys. अगर सचमुच ये हिट कर गया ना किसी भी indirect way में, तो मुझे चॉकलेट खिलाना. Question number 2. James feels manipulated by Anil's exaggerated portrayal. अच्छा, तो ये हो गई सोसाइटी वाली बातें कि कोई आपके बारे में कुछ बोल के चला गया, अब आपको आया गुस्सा. बट व्हाट वुड यू डू इन दैट सिचुएशन? इस गुस्से की वजह से क्या सिर्फ गुस्सा नहीं है, यू हैव सेल्फ डाउट, यू हैव गिल्ट इन यू. सो इन दिस काइंड ऑफ एन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आपको क्या करना चाहिए? That is the question. Now, when I go with option A, it says that you should reflect privately, reminding yourself that expecting repayment is reasonable, which is correct, even if Vikram is facing challenges. Oh my God. That brings up a little bit of eyebrows up expression in my face right now. Okay, then he should not allow guilt to dictate his decision making. That is also true. बट एक सेकेंड, आपको ये अभी क्या करने बोल रहे हैं? अकेले में सोचने बोल रहे हैं ऐसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशंस में. ठीक है, आई विल नॉट बी वेरी क्विक इन डिटरमाइनिंग द आंसर. आई विल गो एंड चेक द अदर ऑप्शंस. James should confront Anil. Oh my God. Remember that in this kind of emotional conflict situations जहां आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि you should actually do what, इस सिचुएशन में किसी को इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंट करके उसके साथ एडिशनली झगड़े करना कि ऐसे कैसे बोल दिया तूने, this will be a very childish thing to do. So definitely option B is out. Now option C says that you should distance himself from Anil. Technically ये हम सबको ही करते हैं, है ना? The people whom we don't like, we generally tend to stay away from them. But is that going to help him currently in dealing with his emotional conflict? नहीं, थोड़े टाइम के बाद भले वो भूल जाएगा, बट इस करंट सिचुएशन में उसको एक्शन जो लेना चाहिए उसमें सिर्फ खुद को डिस्टेंस कर लेना इज नॉट सफिशिएंट. देन कम्स टू ऑप्शन डी. James should trust Anil's judgment and let go of the loan entirely. बिल्कुल नहीं, because यहाँ पर भी आप पैसे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जो कि गलत है. And finally come to option E, which says that you should seek external advice. For the first few seconds मेरा दिमाग मुझे यही बोलेगा कि किसी थर्ड पर्सन की मुझे क्या जरूरत. But then when I read it further, it says take the advice from a neutral friend or a colleague and discuss to gain clarity whether he is guilty or not. अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको वैलिडेशन मिलेगी, और ये थर्ड पर्सन कोई और नहीं बट एक जनरल काउंसलर होगा, जो शायद आपकी लाइफ में आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस या कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है जिसे आप इनडायरेक्टली भी जस्ट यू वेंट आउट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन दैट आज ऐसा ऐसा हुआ एंड थिंग्स हैपन लाइक दिस, इजंट दैट फूलिश? एंड देन दैट पर्सन माइट टेल हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू.
तो जो आपने इनडायरेक्टली किया वो टेक्निकली एक न्यूट्रल पर्सन ही था जिसको आपने ये सारे कहानी सुनाई. एंड देयरफॉर व्हेन वी टॉक अबाउट ऐसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू योरसेल्फ यू शुड कंसल्ट समवन. एंड इसका प्रूफ है मेरे पास, ये भी मैंने उनसे लिया है. ये प्रूफ यहाँ पर आता है. ये ग्रेड 7 की मॉरल साइंस की बुक है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है अभी. दिस स्क्रीनशॉट सेज दैट टॉक इट आउट. whenever you are in an emotional conflict you have to actually talk it out to someone rather than talking to yourself, because if you talk to yourself you can become a narcissist guys. Okay, अगर आपको लगा कि सब आप ही जो कर रहे हो वो सही है. So therefore option E would be more appropriate than option A here. Now moving to the third question on your screen, take a screenshot or just pause the video, try it on your own, and I assume कि आपने ये कर लिया है, so I'm starting the solution. James has learned that lending money to friends can complicate the personal relationships. Of course. तो अब आगे के सिचुएशन में क्या करें? तो आगे के सिचुएशन में ऑप्शन ए, किसी को भी पैसे दे ही ना. वैसे टेक्निकली आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग इन माय इंजीनियरिंग डेज. ओके, बट दैट स्टोरी इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी. बट लेटर ऑन आपको बताते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना है. James should always create a formal written agreement. The moment you say this to someone who is very close to you, the first sentence you will be listening back is, हाँ तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है क्या मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग जाऊंगा. These kind of things. So of course this is also not a feasible act to do. Now when we go to option C, it says that James should only lend money to the friends if he is prepared to write it off as a gift. Again, पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पैसे तो पेड़ पर उग रहे हैं, you know, that stereotypical line. Then comes number D. James should set clear expectations. वाह भाई वाह, clear expectations तो पहले भी थे, 6 महीने में पैसे वापस जो मिलने वाले थे. But look, explaining that he is willing to help friends financially, but he expects transparency and communication. इसीलिए कभी भी सेंटेंस को सिर्फ पहले 2-4 वर्ड्स पढ़कर डिसाइड नहीं करना चाहिए that whether it is your answer or not, especially when it comes to the DM section. ठीक है. So therefore when you come through it you realize कि second part में लिखा है कि अगर पैसे देखो, जैसे तो विक्रम ने भी मतलब बोला था that he you will be giving it back in 6 months, but नहीं दिया. But विक्रम के end से क्या गलती थी, that he not even tried to contact James back, and that was the problem. And therefore option D is clarifying it कि ठीक है भाई, अगर suppose करो किसी भी वजह से you are not able to repay it, at least have transparent communication and clear communication. And thus this makes more sense than any other option to me right now, but I'll still check option E. James should consult his spouse, a trusted advisor, before making financial decisions. ये काफी छोटा सा umbrella है, you know, even when you consult someone that doesn't really mean that you will not get into such a conflict later in life. So it's a trap but not the answer. So therefore option D is the correct answer for this. एंड मैं ऐसे ही और भी ज़्यादा उनके स्टोरीज सुन रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, तो उनके कॉन्वर्सेशंस में या उनके रिसर्च पेपर्स में मुझे कुछ भी ऐसा स्टोरी मिलता है ना, तो मैं फटाक से उस पर एक नॉन PYQ बनाकर आपको वीडियो दे दूंगी, ठीक है ना. बट इसके लिए वापस आपसे क्या लूंगी, आपसे लूंगी एक लाइक, एक शेयर, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट दिस चैनल ग्रोज 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 एंड सबसे बढ़िया चैनल हो जाए MBA के लिए पूरे यूट्यूब पे, ठीक है ना. सो हेल्प मी रीच दैट मार्क एंड आई विल हेल्प यू रीच योर फेवरेट बे स्कूल. Thank you so much. Take care. See you in the next video, guys. Don't forget to like it.